Good morning, all of you. Today we are going to continue our topic Amines chapter number 13. लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर उनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे थे और हम लोग उन्हीं केमिकल रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में देखते हैं किस टाइप से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है यहाँ पर ब्रोमिनेशन। तो जो भी ब्रोमिनेशन एक तरीके से हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हैलोजिनेशन प्रोसेस में होगा, जिसमें हैलोजिनेशन प्रोसेस में हम लोग यहाँ पर ब्रोमीन्स कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ब्रोमीन्स मॉलिक्यूल का हम लोग बेसिकली यहाँ पर ध्यान रखते हैं। सो इसके बाद क्या होगा कि जितने भी ब्रोमीन्स कंपाउंड या फिर जो भी ब्रोमिनेशन है, ये ब्रोमिनेशन बेसिकली यहाँ पर अमीन्स के ये ब्रोमिनेशन हम लोग बेसिकली यहाँ पर अराइल ग्रुप ऑफ कंपाउंड के साथ हम लोग बेसिकली यहाँ पर करते हैं। सपोज करो हम लोगों ने यहाँ पर एनिलीन एज अ कंपाउंड लिया, मतलब जब भी बेंजीन के ऊपर हम लोग NH2 ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे सो दैट इज नोन एज हियर एनिलीन। तो जब भी हम लोग एनिलीन का Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर देन इट विल फॉर्म अ कंपाउंड वेदर इट इज नोन एज हियर 2,4,6 डाइब्रोमोएनिलीन। This compound here is known as 2,4,6 dibromoaniline plus HBr compound will form. Okay, in that plus HBr compound will form with them. It's known as here bromination. This compound or this formation of chemical reaction is known as here bromination, in which bromine compound या फिर bromine molecules has been formed. Next हमारे पास reaction है यहाँ पर nitration. What do you mean by here nitration? Nitration basically means जिसमें नाइट्रो ग्रुप्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। जब भी यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट होंगे तो देन इट इज कॉल्ड नाइट्रेशन। इस नाइट्रेशन ग्रुप ऑफ कंपाउंड में या फिर इस नाइट्रेशन में बेसिकली हम लोग सेम एनिलीन कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप। तो जब भी यहाँ पर बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप ऑफ एटम हम लोग रिएक्शन करेंगे विद HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 228 केल्विन। क्लियर? मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में एट 288 केल्विन पर हम लोग नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करेंगे इन एलिलीन ग्रुप ऑफ एटम के साथ, एलिलीन ग्रुप ऑफ कंपाउंड के साथ, देन इट विल फॉर्म पैरा, मेटा and ortho group of compounds, means para nitroaniline, meta nitroaniline and ortho nitroaniline group of atom will form here. So this reaction is known as here nitration. इस रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर बेसिकली कहते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। सेम एज विथ अगर हम लोग यहाँ नाउ नेक्स्ट इज हियर सल्फोनेशन। एक्चुअली सल्फोनेशन इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन एनी अराइल ग्रुप ऑफ एटम विद अ सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी हम लोग यहाँ पर किसी भी सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन किसी भी अराइल ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ करते हैं सो दैट प्रोसेस हियर इट इज नोन एज सल्फोनेशन। तो जब भी हम लोग कोई भी एनिलीन ग्रुप ऑफ एटम्स का रिएक्शन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देन इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड व्हिच इज नोन एज हियर बेंजीन विद NH3 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। यहाँ पर हम लोगों ने एलिलीन कंपाउंड का H2SO4 के साथ रिएक्शन किया। ये जो अमोनिया कंपाउंड है, ठीक, इसके साथ हमको ये आयंस का फॉर्मेशन होगा, एक आयनिक ग्रुप ऑफ सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा विद सल्फेट आयन। जैसे ही यहाँ पर अमोनियम और सल्फेट आयंस का फॉर्मेशन होगा उसी के साथ हम लोग यहाँ पर रिएक्शन करेंगे एट 453 to 473 केल्विन। ठीक है, इन्हीं का हम लोग यहाँ पर रिएक्शन करेंगे 453 से 473 केल्विन के साथ। सो देन इट विल फॉर्म अ सल्फानिलिक एसिड। इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर सल्फानिलिक एसिड। इस सल्फानिलिक एसिड में बेसिकली बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप ऑफ एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है विद HSO3 ग्रुप ऑफ एटम्स। मतलब एक तरीके से सल्फोनिक ग्रुप ऑफ एटम्स यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, प्रेजेंट्स होंगे। ये जितने भी सल्फोनिक ग्रुप ऑफ एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है ये एक तरीके से एनिलीन के साथ प्रेजेंट होंगे। जब ये रिएक्शंस करेंगे देन इट विल फॉर्म ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का मतलब क्या होता है कि जब भी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इसमें ऐड हो जाते हैं तो देन इट इज नोन एज यस ज्विटर आयन। ये जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है जब यहाँ पर NH3 पॉजिटिव बन जाता है तो इस कंपाउंड को, होल कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर एक तरीके से ज्विटर आयन से डिनोट करते हैं या फिर इट इज कॉल्ड
as a Zwitter ion. So this is all about the sulfonation. Okay, now next topic is here diazonium salt. What is diazonium salt? In any benzene compound where N2 positive or any halide compounds are present or any halogens compound are present is known as here diazonium salt. किसी भी बेंजीन कंपाउंड के ऊपर जब भी N2 पॉजिटिव आयंस यहाँ पर प्रेजेंट हो विद हेलोजेंस ग्रुप ऑफ एटम, सो दिस इज नोन एज हियर डायजोनियम सॉल्ट. इस डायजोनियम सॉल्ट में एक प्रोसेस होती है, इट इज नोन एज हियर डायोजोटाइजेशन. इस डायजोटाइजेशन का मतलब क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स इनटू अ डायजोनियम सॉल्ट इज नोन एज हियर डायोजोटाइजेशन. मतलब बेसिकली जितने भी हमारे पास प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स कंपाउंड है, जब भी हम लोग किसी भी अमीन्स कंपाउंड को डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट प्रोसेस हियर इट इज नोन एज डायोजोटाइजेशन. क्लियर? उस प्रोसेस को हम लोग बेसिकली यहाँ पर डायोजोटाइजेशन के नाम से जाना जाता है. ठीक, अब देखते हैं हम लोग किस तरीके से यहाँ पर बेसिकली किसी भी डायजोनियम सॉल्ट का हम लोग यहाँ पर कन्वर्जन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अमीन्स ग्रुप ऑफ एटम. क्लियर? ये हमारे लिए यहाँ पर अमीन ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें इसको हम लोग यहाँ पर एनिलीन कंपाउंड कहते हैं. इट इज नोन एज हियर एनिलीन कंपाउंड और बेंजामीन ग्रुप ऑफ कंपाउंड. जब भी हम लोग इसका बेंजामाइन ग्रुप ऑफ कंपाउंड का NaNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ HCl, इन प्रेजेंस ऑफ HCl, देन इट विल फॉर्म अ डायजोनियम सॉल्ट. इन डायजोनियम सॉल्ट में हमेशा बेंजीन के साथ N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ग्रुप ऑफ एटम्स यहाँ पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. इस डायजोनियम सॉल्ट के साथ साथ हमको NaCl प्लस H2O ग्रुप ऑफ एटम्स का भी फॉर्मेशन होगा. इस डायजोनियम सॉल्ट को यहाँ पर हम लोग कहते हैं इसको डायजोनियम सॉल्ट. बेसिकली जितने भी डायजोनियम सॉल्ट है, ये डायजोनियम सॉल्ट एक तरीके से मतलब डिफरेंट कलर्स के फॉर्म में, या फिर हम लोग जिस तरीके से जो हेलोजेंस है, हेलोजेंस के चेंज करने पर इनकी जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? हमेशा चेंजेस होंगे. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस. मतलब जो भी हेलोजेंस का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट कंपाउंड ओनली वी गेट द डायजोनियम सॉल्ट. प्लस NaCl and plus water we will get as the byproducts in this compound. Now its physical nature of diazonium salt is a crystalline solids. ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट एक तरीके से हमारे लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है जो फेयरली सॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ. ठीक है, फेयरली मतलब कंप्लीटली सॉल्युबल्स नहीं होते हैं वाटर के साथ, डिपेंड करता है हेलोजेंस एटम्स के लिए. ठीक, अब जितने भी डायजोनियम सॉल्ट्स है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में हमको डिफरेंट नेचर्स में शो हो सकते हैं. ये किसी भी सॉल्वेंट कंपाउंड के साथ भी मिक्सचर्स बना सकते हैं एज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड और एज अ ग्रुप ऑफ एटम्स के कारण. In this online lecture, we're going to discuss the diazonium salt formation mechanism. And what we're going to see here is that key point number 1, the diazonium salt formation mechanism involves addition of NO, followed by a series of acid-base reactions that turn the oxygen to water and creates a triple bond between the two nitrogens. The water is then booted off as a leaving group. We're also going to see number 2 is that diazonium salt formation is only possible with primary aryl and alkyl amines. So let's dive into this here. Remember, what we've learned so far is that to create a diazonium salt, you need an NH2 on a benzene ring, you're adding NaNO2 and HCl, and that gives you this right here, the diazonium salt as a product. Now, to understand the mechanism behind this reaction, let's first talk about how the NaNO2 and the HCl react with each other. That's where this mechanism begins. So let's look at that here. And what I'm going to do is write out the NaNO2 group in its Lewis dot form right here. So here's the first step of the mechanism. One of the oxygens on the NO group gets protonated by the HCl acid. So this is just an acid-base reaction. What we end up with is this as a product. Then another HCl in solution protonates that same oxygen again. That turns him now into water, which remember is a much better leaving group. And that's exactly what happens here. Water is booted off as a leaving group, so you're ending up with water as a product,
and what's left over here is the NO group, giving the N a positive formal charge. This thing is called a nitrosonium ion. So, going back to the big picture here, all we're saying is that the NaNO2 reacts with the HCl to create this NO positive group here. And it is this thing right here that is now ready to react with the benzene ring with the amine on it. So let's look at the mechanism of how this is going to happen. The first step here involves the NH2 group on the benzene ring being attracted to this positive and creating a bond between the two nitrogens, giving us this result right here. Take a few seconds here to make sure you see the actual matching up here of these two molecules. Now, let's do this. The NH2 group in our product here, let's expand out these two hydrogens to get a better look. This sets us up for the next step of the mechanism. What we then do is add some sort of base here. Doesn't matter. There's a base in the reaction that comes along and rips off this hydrogen right here and leaves the electrons behind on that nitrogen. We end up with this as a result right here, which happens to be called a nitrosoamine. And the mechanism keeps going here. At this point, we add an acid. Now careful here, I'm going to be generic. I'm just going to call it HB. Remember, our diazonium reaction is run in HCl, so there's plenty of acid available. And watch what happens here. The electrons on one of the nitrogen here fall down between these two nitrogens, and the pi electrons in the NO bond go out and grab this hydrogen right here, causing the electrons between H and B to jump up on the B. What we end up with is something that looks like this. And since our HB donated a proton to the molecule, here's how he exists right now, as B-. And the reason why that's important to know is watch what happens here. Now that he's B-, what he does here is grab off this next hydrogen right here. And again, same kind of step here. The electrons jump up on this nitrogen right here, and you're ending up with this as a result. And as a side product, since we added the hydrogen back to the B, he's now back to being HB. The molecule we've created so far in the mechanism happens to be called an N-hydroxyazo compound. But we're still not yet at the diazonium. Let's keep going here. Right now, remember, we still have our HB. What happens now is we protonate again this oxygen right here, and the electrons between H and B, of course, jump up on the B, and now our OH has been turned into water. Which, remember, we've seen this many times in organic chemistry mechanisms. Anytime we're turning OH into water, it usually means that he's being prepared to leave. And that exactly is what happens here. In the next step of the mechanism, the electrons on the nitrogen right here fall down between these two nitrogens and boot off water right here. And at this point, look what we have here, the diazonium ion. And as a side product, we would have the leaving group water right here. So what you saw here is the overall mechanism for diazonium salt formation. Remember, we showed in the mechanism how the diazonium ion is formed, but remember, since this reaction involves HCl, the Cl- in the reaction would of course be attracted to the diazonium ion, therefore making the diazonium salt. Now, you might be thinking to yourself, that's a lot of steps and that's a pretty hardcore mechanism, which it is. But let me show you how to memorize the mechanism if you have to on your orgo exam. The first thing you'd have to remember is that the actual species that reacts with the benzene ring with the NH2 group is the NO plus group here on the right, and that this is how they first connect to each other to make this product right here of this step. And remember, let's expand these hydrogens right here, and here's the key to remembering the mechanism here. All that is really happening here, the big picture, is remember we have this base B- here, and what he does is simply remove these two hydrogens right here overall. He takes them off like this, and then simply puts them back on the molecule, but at a different location.
and that is on this oxygen right here, so that he could become water. Then eventually what happens is the two nitrogens right here, remember, we got to get a triple bond between them to make the diazonium. So eventually, steps in the mechanism create a triple bond between these nitrogens and leave behind just a single bond between this nitrogen and the water. And again, since the water is a good leaving group, we eventually boot him off like this. This creates our diazonium ion. If you remember that this is what's happening overall, it could help you remember the individual mechanistic steps that are necessary to get to this result. Remember, we learned in a previous online lecture all the mechanistic moves that are possible in organic chemistry. And we also talked about how seeing what's in front of you and knowing where you're going could help you get through a mechanism. So that's our mechanism again for the diazonium salt formation. Now, some other things I'd like you to know here just in case is that you don't have to have a benzene ring to make a diazonium. For instance, this is just a simple alkyl amine. Notice if I use the same reagents right here, NaNO2 and HCl, you can actually turn the NH2 group into the diazonium salt. So again, the benzene ring is not necessary for this reaction to take place. But however, there are some restrictions here that I'd like you to know. In order for a diazonium salt to form, the amine has to be at least primary. And remember, what that means is that the nitrogen has to have two hydrogens and only one R group connected to it. And we can see that that R group could be a benzene ring or an alkyl group. So that means primary amines only. So if, for instance, look at this molecule right here, notice that nitrogen has only one hydrogen and two R groups. Two R groups make him a secondary amine. If you try to form a diazonium salt with this molecule, again adding the NO plus group here, the nitrogen will still attack the other nitrogen here and create this thing right here as a result. And if you add a base to this right here, he'll still rip off, remember, this hydrogen right here, and the electrons will fall on this nitrogen like this. This gives us this product right here, a nitrosoamine. But here's what we're learning. The reaction stops at this point. Think about it. You don't have another hydrogen to rip off and therefore put on the oxygen so that you could turn the oxygen into water and boot him off. So just know that secondary amines will not form a diazonium salt. And I'd like you to know that this is also true for tertiary amines. In this particular case, when you add the NO plus group here, the nitrogen tries to attack this nitrogen here and make a connection to make this product right here. But notice in this case, there's no hydrogens to rip off that nitrogen with the plus charge. So what happens here is that this bond breaks and lets go, which means we go right back to where we started. So this is why the diazonium salt can't form for tertiary amines. But just in case, I'd like you to know what can actually happen here instead. Remember, the NO plus group that we're adding is technically, because of his positive formal charge, an electrophile, which means the NO plus and the benzene ring on the left can participate in an electrophilic aromatic substitution reaction, EAS, with again the NO acting as the electrophile. And remember, nitrogens on a benzene ring are ortho-para directing activators. So the NO electrophile will add either ortho or para to this ring. If given the choice here, in this case, we'd prefer the para product because having those methyls on the nitrogen is slightly bulky, so the NO group would prefer to be far away from that as possible, placing him para to the NCH3 group. So what have we learned here? Key points. Number 1, the diazonium salt formation mechanism involves addition of NO followed by a series of acid-base reactions
that turn the oxygen into water and creates a triple bond between two nitrogens. The water is then booted off as a leaving group. We also saw that number 2, diazonium salt formation is only possible with primary aryl, and that is primary amines that are on benzene rings, and primary alkyl amines.